Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Last time, Walaikum salam. we introduced the idea of interpolation and mentioned the first technique of interpolation, that is named Lagrange interpolating polynomial. Uh, I described what's the structure of the Lagrange formula. If we go for linear interpolation, we use this formula. Right side, everything is constant except for this x, which is where we want to interpolate, given the data x0, y0, x1, y1. In between x0 and x1, we can choose any value of x, and for that, the estimated value of the y or p, the polynomial, first degree polynomial, will be obtained. Whereas given 3 data points, then the formula modifies and this time we have similar structure, except that now we have 3 points, and using 3 points, we can make a quadratic polynomial. And to construct the quadratic polynomial, we use the same structure as previously. Y0, y1, y2 terms. And with y0, we have x minus x1, x minus x2 in the numerator. X minus x0 is not there. And denominator is constructed by replacing x by x0 in each of the factors that is present in the numerator. Similarly, with the coefficient of y1 has a similar structure. X minus x1 is not there in the numerator, whereas denominator is same as numerator, but x is replaced by x1. With 3 points, we can make this quadratic polynomial. With 4 points, we will have y0, y1, y2, and y3. And instead of 2 factors, we will have 3 factors, and so on and so forth. Today, I start with the first the generalization of the Lagrange interpolating polynomial formula. When we use in this course this formula, you can work manually, use to apply these kind of formulas. And if we go for making a program, and then the program is based on this algorithm, where we can find out coefficients of the y terms known as Lij or Lagrange polynomials. That is the product of such terms, and then taking the product of these products with the corresponding y, and all such terms are then added together. Let me demonstrate the use of this in Excel sheet. Here I consider 2 points, x value 3.2, y value 4.3 corresponding, and corresponding to x value 3.9, I change this value to say 6.5, and I want to estimate y value
for a value of x which is between 3.2 and 3.9. I have chosen 3.5, and this is the formula that I have to use. So in order to use this formula, what I want to do, y naught, and y naught is 4.3. So I start considering 4.3, which should be multiplied to what? X minus x1. So x is 3.5, x1 is 3.9. So 3.5 minus 3.9 divided by x naught minus x1. X naught is 3.5, 3.2, sorry. 3.2 minus x1, and x1 is 3.9. That completes the construction of the first term. Y naught term multiplied to x minus x1. X is 3.5, x1 is 3.9. Denominator is x1 naught minus x1, so 3.2 minus 3.9. Now what we need to add to this, the next term of the formula that contains y1. So what's the value of y1? Y1 is 6.5. And I need to multiply it with this structure, x minus x naught. So x is 3.5 minus x naught is 3.2 divided by x1 minus x naught. So what is x1? X1 is 3.9 minus x naught, which is 3.2. Linear interpolation formula is completely filled with the required values. Y naught 4.3, y1 6.5. With y naught, we have x minus x1 upon x naught minus x1. So x is 3.5 minus x1, and denominator x naught minus x1. So x naught is 3.2 upon 3.9. And let us see what value this gives us. This gives us the value of y equal to 5.24. Note that if I make a line with the help of these 2 points, x naught, y naught, x1, y1, 3.5 x वैल्यू के लिए लाइन पर मुझे 5.24 2857 वैल्यू मिलेगी. That means I have estimated a missing y value for a missing x value, and that is what interpolation means. Now, if I have to go for a higher degree approximation, that is a second degree approximation, I need to consider this formula. We note one thing, that using the previous result, we cannot extend linear interpolation to quadratic interpolation by adding only one term, because in each term now there are extra factors. So we have to keep track of extra factors, and we have to write down the whole formula again, and we cannot use this value, which is obtained from linear interpolation. We have to use the complete formula. So let us see the complete formula is used as what? Y naught. I have same x naught, y naught, x1, y1. I have an extra value 4.6 के लिए, y की value 2.8. So I start with applying this formula, y naught, and y naught is 4.3, and with y naught we have to multiply
two factors in the denominator, and then we divide by two factors that are there in two factors in the numerator, then divide by two factors in the denominator. So start filling the values. X value throughout will be used as 4.3. So 4.3 minus x1, which is 3.9, multiplied by x minus x2. X is 4.3 currently, minus x2. The value of x2 is 4.6. This numerator is completed, which has to be divided by x naught minus x1, x naught minus x2. So what is x naught? X naught is 3.2 minus x1 is 3.9. One factor. The other factor is x naught minus x2. So 3.2 minus x2, which is 4.6. And now first term of the second degree Lagrange polynomial is written, and we go to write down the second term, which starts with y1. So value of y1 is 6.5 multiplied by x minus x naught, x minus x2. This time we don't have x minus x1. Previously we never had x minus x naught. So x is 4.3 minus what? X naught, and x naught is 3.2 multiplied by x minus x2. So 4.3 minus x2 is 4.6. The numerator is completed. The denominator. Note that previously I used only single brackets. This time I'm using double brackets because I have to keep numerator separate and denominator separate. In the denominator of the second term, x minus x naught, that is 3.9 minus 3.2. Then x1 minus x2. So x1 is 3.9 minus x2 is 4.6. Denominator completed, second term completed. Then we write down the third term, which starts with the value of y2. Y2 is 2.8 now, and that has to be multiplied by product of x minus x naught and x minus x1. X is 4.3 minus x naught is 3.2 multiplied by x minus x1. X is 4.3 minus x1 is 3.9. The denominator is complete, numerator is complete. We go to write down the denominator now. And that is x2 minus x naught and x2 minus x1. x2 is 4.6 minus x naught is 3.2 multiplied by x minus x2 minus x1. So x2 is 4.6 minus x2 minus x1. So 4.6 minus 3.9. The denominator is complete. And in fact, we have written down every value involved in the formula for P2X, and let us see what's the result. The result is 5.108 for 4.3. We can use the graphical representation of the data and can see the position of y value that we have calculated in both cases. One important point to note is that when you have got 2 points only, you are doing linear interpolation. So in fact, these 2 points make a line.
And if I choose a value between 3.2 and 3.9 of x, I should get a value of y between these two values. And that is what the case was. Similarly, in case of second degree interpolating polynomial, now I have to use 3 points. 3 points से कम में second degree polynomial नहीं बन सकता. So you have to consider an extended formula, one term increase, and in each term there are some product terms involved. And when you go for generalized, for example, third degree or fourth degree, you will have more terms, and each term will contain more products of this type. In P3, this will start with x minus x y naught, x minus x1, x minus x2, and x minus x3. X minus x naught is not appearing, and all these three factors, x will be replaced by x naught to write down the denominator. And the same will be done with each of these two terms, and there will be an additional term because 4 points y naught, y1, y2, y3 should be used. So that will be an extended formula. Last thing about this example that we have just done for P2x, we were trying to estimate a value of y for x is equal to 4.3. 4.3 lies between these two numbers. So in general, our result should be somewhere between these two numbers, and which is the case. So now you can do exercises with the cubic polynomial or fourth degree polynomial. But what will be the change? The change will be that if I want to do third degree third degree estimation, I should have another point. This big a set of 4 points, and then some x values will be introduced, some y values should be introduced, and with this extended data, we can use interpolating polynomial of first degree for 4.3. फर्स्ट डिग्री करना होगा तो सिर्फ ये 2 पॉइंट इस्तेमाल होंगे. दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू नोट कि 4.3 पर अगर फर्स्ट डिग्री एस्टिमेशन करनी है तो 4.3 कहाँ से मिसिंग है? 3.9 और 4.6 के बीच में से मिसिंग है. So we will use the 2 points for this formula that contains x is equal to 4.3. For second degree interpolating polynomial, we use 3 points, and for third degree polynomial, we will have to use all these 4 points. I'm not going to do this exercise. What exercise? For example, I say estimate y for say x is equal to 4.1. And then I say using third degree Lagrange formula. So I leave this for your exercise. You calculate y. I hope this is sufficient to make you understand how the Lagrange interpolating polynomial can be used. One last thing that I need to tell you, that if instead I say that 4.1 पे you estimate the value of y using second degree polynomial. Now at 4.1, which is somewhere here, we have to use for second degree polynomial, we have to use 3 points, but we have more than 3 points. So we need to make a choice
कि इन चार में से कौन से 3 पॉइंट्स हैं वो इस एस्टिमेशन के इस्तेमाल किए जाए. Now 4.1 lies where? It lies between 3.9 and 4.6. If I choose first 3 points, the range of values of x is from 3.2 to 4.6, that makes 1.4. What's the half of 1.4? 0.7. So if I add 0.7 to 3.2, that becomes 3.9, which is close to 4.1 we are trying to estimate. Whereas अगर मैं सेकेंड डिग्री इंटरप्रेटिंग पोलिनोमियल के लिए ये 3 पॉइंट्स इस्तेमाल करूँ, तो इन 3 पॉइंट्स में x की रेंज क्या है? 3.9 to 5.1, which is difference is 1.2. The half of 1.2 is 0.6. So if I add 0.6 to 3.9, that makes 4.5. Now 4.5 is further away from 4.1 as compared to previous calculation for first 3 points. So midpoint of the range of first 3 is 3.9, which is closer to 4.1, and midpoint of the range 3.9 to 5.1 is 4.5, which is further away from 4.1. So out of these 4 points, better choice will be use first 3 points instead of next 3 points. This is a trick that we'll be using not here, but whenever we do any interpolation exercise. So let me go back to the Word files. This here ये जो एरर एस्टिमेशन है ये मैं लेटर स्टेज पे डिस्कस किया करता हूँ. ये मैं कैलकुलेशन वर्ड पे करके दिखा रहा था. आज मैंने आपको कैलकुलेशन एक्सेल पे करके दिखाई है. P2 at 4.1 फॉर दिस डेटा ये मैंने लिखा हुआ है, जिसका रिजल्ट ज़ाहिर है कैलकुलेट करना हमारे पास जब तक ये कैलकुलेटर ना हो. हम लिख तो सकते हैं. मैंने पहली वाली टर्म में नंबर्स डाले हुए हैं, बाकी टर्म्स में मैंने सिंबल वैल्यूज छोड़ दिए. हम नंबर डाल सकते हैं, लेकिन हमने अब एक्सेल में ये सब नंबर डाल के फॉर्मूले में देख लिए और कैलकुलेशन कर ली. विद दिस आई टर्मिनेट डिस्कशन ऑन Lagrange formula and move forward with the other formula that we started discussing last time, the divided difference interpolating polynomial. Here this formula is highlighted for n degree polynomial. But this polynomial is based on अरे भाई वालेकुम अस्सलाम. Instead of sending your salam in a message, you can just switch on your mic and say अस्सलाम वालेकुम. और उसकी ज़रूरत नहीं है कोई ऐसी ख़ास. आप आ गए, आपकी बड़ी मेहरबानी. Now, the next polynomial formula, interpolating polynomial formula, that is known as Newton's divided difference interpolating polynomial, उसके लिए हमें पहले एक टेबल बनानी पड़ती है और वो टेबल कहलाती है डिवाइडेड डिफरेंस टेबल. और यहाँ मैंने डिवाइडेड डिफरेंसेस क्या होते हैं वो डिस्क्राइब किया है. मैंने ये नोटेशन इंट्रोड्यूस की थी. फर्स्ट ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस
is the slope of the line joining first 2 points x naught y naught and x1 y1. Uh, I can have many first order divided differences. Uh, the one that is considered between x1 and x1 y1 and x2 y2, it is the slope of the line that joins these 2 points x1 y1 x2 y2, and that is known as first order divided difference starting at point x1. तो एक नोटेशन तो ये है जो किताब में फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल की गई है, और एक नोटेशन ये है जो हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं बिकॉज हम सुस्त आदमी हैं, और if this notation is used, that means we are talking about divided difference between the point x1 y1 and x2 y2, and its value is given by this. When we use this notation, we mean this superscript in the large bracket tells us the order of the divided difference, and the subscript tells you that what is the first x value used to make this divided difference. Like here, this means the superscript means first order, and subscript means that we start at x2. So we'll be using x2, y2, and x3, y3 to make this first order divided difference. So when we go for higher order divided difference, that is, for example, second order divided difference, it will use 3 points from x naught y naught, x1 y1 to x2 y2. These 3 points are used. This is one notation, and this is the other notation. The meaning is same. Oh, sorry. Superscript indicates second order divided difference. Subscript indicate from what x value we have started. And what's the definition? For second order divided difference, in the numerator, we take the difference of first two first order divided differences. And the denominator is the range of all x values, yani last x value minus first x value. So x2 minus x naught. So if I go to write down a divided difference that involves x1, x2, x3, superscript indicates second order, subscript indicates that we are starting at x1. इसका मतलब है x1, y1, x2, y2, x3, y3 involved हो रहे हैं. And second order divided difference means in the numerator we will have two first order divided difference. Note के यहाँ पे जो दो फर्स्ट ऑर्डर डिवाइड डिफरेंस लिए गए हैं, एक सेकंड से शुरू हो रहा है, एक फर्स्ट से शुरू हो रहा है. यहाँ पे जो लिए गए थे, एक फर्स्ट से शुरू हो रहा था और एक जीरो से शुरू होता है, यानी ये x1 से शुरू हो रहा है, ये x0 से शुरू हो रहा है, और इनकी वैल्यूज एक ये है और एक ये. And you divide it here by x2 minus x0 whole range of x values. Here you write down x3 minus x1, the whole range currently used. So this is the way the second order divided differences are constructed. And one interesting thing is that if you use the term or this notation, the superscript says zero order, subscript says कि ये x0 से शुरू हो रहा है. This notation is used for only the function value at y0, at x0. So y0 ही के लिए ये notation इस्तेमाल की जाएगा. बिल्कुल वैसे ही जैसे हम कहें कि एक फंक्शन है x स्क्वायर, उसका डेरिवेटिव क्या होगा? All of you know that x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होगा, और x स्क्वायर का सेकंड डेरिवेटिव क्या होगा? That means डेरिवेटिव का डेरिवेटिव. तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 2x का डेरिवेटिव 2, तो x स्क्वायर का सेकंड डेरिवेटिव 2 है. लेकिन कोई पूछे कि x स्क्वायर का जीरोथ डेरिवेटिव क्या है?
तो एक्स स्क्वायर का जीरो डेरिवेटिव मीन्स एक्स स्क्वायर इटसेल्फ। बिल्कुल इसी तरह जब हम फर्स्ट ऑर्डर डिवाइड डिफरेंस कह रहे हैं, दैट मीन्स दिस रेशियो, this ratio. When we are saying second order divided difference, we means now in the ratio we use the first order divided difference, the difference of two first order divided difference. But if we say that zeroth order divided difference starting x naught, इसका मतलब होगा कुछ नहीं, it means only y naught. Similarly, if I use, for example, if I use this zeroth order divided difference, what should it mean? The superscript indicates you're not taking divided difference. The subscript indicates that you are talking about the value of y1. जब यहाँ पे subscript 0 था, तो that means value y1, y0, and here it means the value of the function at x1 and that is nothing but y1. Now, once we learn how to make divided differences, first order, second order, third order, up to any order for any given data, the Newton's divided difference interpolating polynomial has a simpler structure compared to Lagrange formula. Now, what is the structure? The structure is that we start with the first possible y value, add to it a term that contains first order divided difference starting at the first value or first point multiplied by x minus x coordinate of the first point. What's the next term in the formula? It contains second order divided difference starting at x naught, and second order differences के साथ we have a product of two linear factors of x minus x naught, वो पहले भी था, अब x minus x1 और add हो गया. What shall be the next term? It will contain third order divided difference starting at x naught, and its coefficients will be product of three linear factors starting at x minus x naught, then x minus x1, ये तो पहले भी था, अब x minus x2 का इजाफा हो गया. If you go to write down the next term, which I have not written here, but if you want to write down the next term, I will have the next order divided difference, third के बाद fourth आ जाएगा, fourth order divided difference, और जो इसके साथ कोफिशिएंट है उसमें इजाफा हो जाएगा x माइनस x3 का. एंड ये सिलसिला चलता रहेगा. Now, we have learned what is the first order divided difference. We have learned what is the second order divided difference. What should be the third order divided difference? Third order divided difference में हम दो second order divided difference का difference लेंगे and we'll divide by the whole range of 4 points. यानी second order divided difference में आपने x की एक वैल्यू छोड़ के लिखा था डिनोमिनेटर, तो थर्ड ऑर्डर में x की दो वैल्यू छोड़ के लिखेंगे. So if you want to look at the shape of the third order divided difference,
it will be like this. You will have one more point. But this next point introduced will be x4. यहाँ पे जो divided differences हैं वो अब सेकेंड ऑर्डर आ जाएंगे. But these second order difference, ये वाला starts at x1 and this starts at x2. But what will be the denominator? Denominator will be whole range of x values used. That is x1 से x4 तक. So x4 minus x1 आ जाएगा. And now this is the third order divided difference written. I hope you have some idea that how the higher order divided differences are constructed. Now this was third order divided difference starting at x1. If I had to start at x0, what change should be there? एक तो यहाँ का सबस्क्रिप्ट 0 करना पड़ेगा. Second order difference is starting at x0. Second order difference starting at x1. The points used shall be x0, x1, x2, and x3. So now what's the range of x values? Range of x values is now from x2 to x3. And similarly, higher order divided difference can be made. Let me now show you how I will implement this in Excel, or how you will be calculating all these things. I have noted down here the formula, generalized formula, and this is my data. And I don't need this graph right now, so I remove it. I've been given this data. वो ग्राफ जो है एक्सटेंड इसमें से शॉर्ट लिस्टेड डेटा का था. अब मैं अगर सारा का सारा डेटा जो है जो दिया हुआ है उसका प्लॉट बनाऊं तो वो प्लॉट इस तरह का. हाँ, ये पूरा तो था यार, सॉरी. नाउ आई हैव टू डिसाइड कि मुझे किस x वैल्यू पर y निकालना है. For example, ये x values दी हुई हैं 1.2, 2.8, 3.5. This is x0, this is x1, x2. Let me work out at x is equal to 4. And my question is, what is y equal to? Now, what decisions I have to make, or what instructions I should have been given? पहली इंस्ट्रक्शन तो ये है कि y को एस्टिमेट करना है x इज इक्वल टू 4 पे, एंड x इज इक्वल टू 4 इज मिसिंग. दूसरी इंस्ट्रक्शन जो मुझे चाहिए या दूसरा डिसीजन जो मुझे करना है वो ये करना है कि 4 लाइज बिटवीन 3.5 एंड 4.6. मैं लीनियर इंटरपोलेशन करूं तो यही 2 पॉइंट इस्तेमाल करूंगा. क्वाड्रेटिक इंटरपोलेशन करूं तो मैं या तो ये 3 पॉइंट इस्तेमाल करूंगा या ये 3 पॉइंट इस्तेमाल करूंगा.
जो मैं पहले भी डिस्कस कर रहा था इन केस ऑफ लाग्रांज। अगर मुझे फॉर एग्जांपल 4 डिग्री करनी है एस्टिमेशन, तो मुझे 5 पॉइंट इस्तेमाल करने होंगे। तो दीज आर टोटल ऑफ हाउ मेनी पॉइंट्स? I could have written 1 2 3 4 5 6, but I used the formula पिछली value added 1. So in fact this should start at 0. Now मुझे फर्स्ट डिग्री करनी है, सेकंड डिग्री करनी है, थर्ड डिग्री करनी है, फोर्थ डिग्री करनी है। ये फार्मूला इस्तेमाल करने के लिए मुझे डिवाइडेड डिफरेंस बनाना है। एंड नाउ आई वांट टू शो यू हाउ द डिवाइडेड डिफरेंसेस आर मेड। फर्स्ट ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस जो है वो फर्स्ट 2 पॉइंट्स से बनने वाला स्लोप है। तो इन 2 पॉइंट्स से स्लोप जो बनेगा वो क्या बनेगा? इट विल बी y1 minus y0. So I write down C9 minus C8. ये आ गया न्यूमरेटर फर्स्ट ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस का, डिवाइडेड बाय x वैल्यूज 2.8 minus 1.2. So 2.8 minus 1.2, and that becomes the first order divided difference. So we have calculated first order divided difference using these 2 points, which is indicated here. Oh, ये मैंने क्या किया? I should have used the cells y b9 minus b8. वो टेक्निकली तो सही था वो, लेकिन मैं आई वांट टू मेक इट अ फॉर्मूला, बिकॉज बाकी सब में मैं दिस माइनस दिस डिवाइडेड बाय दिस माइनस दिस माइनस दिस डिवाइडेड बाय दिस माइनस दिस लिखने के बजाय जब मैंने ये फॉर्मूला फीड कर दिया तो मैं इसको कॉपी ड्रैग करता हूँ, तो मेरे पास सारे के सारे गड़बड़ हो रही है। अच्छा, ये जो एडिटर वो साइंटिफिक नोटेशन थी वो इंटरफेयर कर रही थी इन, let me copy paste now. Now it's all right. I hope you understand that हमने formula this cell minus this cell divided by this cell minus this cell इसमें फीड कर दिया। जब हम इसको कॉपी करके इसमें पेस्ट करेंगे तो सेल खुद ब खुद आगे बढ़ जाएंगे। So what is this last value? This is the difference of this minus this divided by this minus this. So all first order divided differences are constructed. Let us see second order divided differences. मैंने ये हेडिंग डाली थी लेकिन काम नहीं आ रही, वो गड़बड़ कर रही है ना। सेकेंड ऑर्डर डिवाइड डिफरेंस हमने देखा था कि सेकेंड ऑर्डर डिवाइड डिफरेंस मीन्स व्हाट? इट मीन्स द डिफरेंस ऑफ 2 फर्स्ट ऑर्डर डिवाइड डिफरेंसेस। तो भाई फर्स्ट ऑर्डर डिवाइड डिफरेंस जो है वो ये है, किस किस सेल में है? D9 और D8 में। D9 माइनस D8, ये डिफरेंस ऑफ 2 फर्स्ट ऑर्डर डिवाइड डिफरेंसेस आ गया। और फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर डिवाइड डिफरेंस का डिनोमिनेटर क्या है? एक x वैल्यू छोड़ के x2 माइनस x0। तो x2 हमारा किस सेल में है? B10 में। तो B10 माइनस B8। तो सेकेंड ऑर्डर डिवाइड डिफरेंस में there was a difference of 2 first order divided differences divided by the range of x values from x0 to x2, and that we have
पीरियड एंड सेकेंड ऑर्डर डिवाइड डिफरेंस कैलकुलेट हो गया। और चूंकि मैंने सेल रेफरेंस के साथ सारा किया है तो मैं when I copy this cell downward, you will see that what do you get? Look at this last second order divide difference. This is made from what? This is made from two first order divide differences. D12 minus D11 divided by X range of X values. 6.2 minus 4.6 or cell B13 minus B11. In this way, I can construct the third order divide difference whether I need it or not. I am just trying to make you understand the divide difference table कैसे बनती. So let us write down the third order divide difference, and that should be the difference of two second order divide difference. Second order divide difference are in the column E. So E9 minus E8 न्यूमरेटर आ गया. अब थर्ड ऑर्डर डिवाइड डिफरेंस जो है इसके अंदर 4 पॉइंट इस्तेमाल हो रहे हैं 1.2 से लेके 4.6 तक. इसको मैं डिवाइड करूंगा इस रेंज से. दैट मीन्स x3 minus x0. So x3 is in what cell? B11 minus B8. The third order divided difference is constructed. Look, it's using the difference of these two divided by the difference of fourth x minus the first x. And you want to make more. तो एक्सेल का इस्तेमाल जो है डिवाइडेड डिफरेंसेस बनाने के लिए ज़्यादा एफिशिएंट है. सिर्फ आपको पहली दफ़ा फॉर्मूला लिखना है, बाकी कॉपी जो है. व्हेन यू डू इट मैनुअली यूजिंग कैलकुलेटर, ऑफ कोर्स तुम्हें पिछले दो डिवाइडेड डिफरेंस, फॉर एग्जांपल इन दो को इस्तेमाल करना है, इसको और इसको. तो दिस माइनस दिस. बट व्हाट विल बी दिस नंबर डिवाइडेड बाय? तो तुम्हें ख्याल रखना होगा कि कौन से ऑर्डर का डिवाइड. अगर फर्स्ट ऑर्डर डिवाइड डिफरेंस है तो एक्स वैल्यूज की रेंज में से आपने कुछ नहीं छोड़ना. अगर सेकेंड ऑर्डर डिवाइड डिफरेंस है तो एक्स वैल्यू की रेंज में से एक छोड़ना है. अगर थर्ड ऑर्डर डिवाइड डिफरेंस है तो डिनोमिनेटर में एक्स वैल्यूज में से बीच के दो छोड़ना. सो लेट अस राइट डाउन द फोर्थ ऑर्डर डिवाइड डिफरेंस. I hope you can do that. So here I have sort of completed the fourth order divided difference table, except for the fourth and the fifth order. I hope you can do that. चलो यार, आज पहली दफ़ा कर रहे हैं, मैं पूरा कर देता हूँ. Is equal to fourth order divided difference is in the numerator has two third order divided differences. The two third order divided differences are coming from F9 minus F8. Anybody asking something? No, sorry sir, गलती से माइक ऑन था. कोई बात. Now we are making fourth order divided difference. Fourth order divided difference, and that means 4 points are being used. 4 points are being used, और फर्स्ट के लिए 2 पॉइंट, सेकंड के लिए 3 पॉइंट और बीच में से एक छोड़ना, थर्ड के लिए 4 पॉइंट बीच में से 2 छोड़ना, फोर्थ के लिए 5 पॉइंट बीच में से 4 छोड़ना. कौन से 5 पॉइंट? 1 2 3 4 5. तो अब जो डिनोमिनेटर में आएगा वो बीच के 3 पॉइंट छोड़ के 5.7 माइनस 1.5. तो 5.7 का मतलब है B4. तो B4, oh not B4, B12 minus B8. That becomes the fourth order divide difference, and this one copied. एक चीज नोट करो, टोटल 6 पॉइंट्स हैं, तो 6 वाई वैल्यूज हैं, 6 एक्स वैल्यूज हैं. फर्स्ट ऑर्डर डिवाइड डिफरेंस 5 बनेंगे, सेकेंड ऑर्डर डिवाइड डिफरेंस 4 बनेंगे,
थर्ड ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस 3 बनेंगे, फोर्थ ऑर्डर डिवाइड डिफरेंस 2 बनेंगे, और फिफ्थ ऑर्डर डिवाइड डिफरेंस एक ही बनेगा, एंड दैट विल बी व्हाट, द डिफरेंस ऑफ टू फोर्थ ऑर्डर डिवाइड डिफरेंसेस which is coming from G9 minus G8, दो फोर्थ ऑर्डर डिवाइड डिफरेंस divided by the whole range of x values. फिफ्थ के लिए 6 के 6 पॉइंट इस्तेमाल हो रहे हैं, बीच के 4 छोड़ देंगे, तो लास्ट इज फ्रॉम सेल B13 minus the first value is coming from B8. 6 पॉइंट से लार्जेस्ट डिवाइडेड डिफरेंस जो है वो फिफ्थ ऑर्डर बनेगा। मैं अगला ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस नहीं बना सकता बिकॉज आगे डाटा ही नहीं है मेरे पास। फिफ्थ ऑर्डर डिवाइड डिफरेंस का मतलब है मैं 6 पॉइंट इस्तेमाल कर रहा हूँ, सो एक ही डिवाइडेड डिफरेंस बनेगा। हाँ, अगर नीचे और डेटा ऐड कर दूँ तो फिर मजीद फर्स्ट फिफ्थ ऑर्डर भी बनेंगे, मजीद फोर्थ ऑर्डर भी बनेंगे, मजीद थर्ड ऑर्डर। तो अगर एक्सरसाइज सिर्फ इतनी करनी है कि मेक अ डिवाइडेड डिफरेंस टेबल फॉर द गिवन डेटा, नाउ द एक्सरसाइज इज कंप्लीट। I want to use this formula here for estimating y using say fourth degree और थर्ड डिग्री। मैं सुस्त आदमी हूँ, थर्ड डिग्री से काम चलाता हूँ, तो थर्ड डिग्री के लिए कितने पॉइंट इस्तेमाल होंगे? याद रहे, फर्स्ट डिग्री के लिए 2 पॉइंट, सेकंड डिग्री के लिए 3 पॉइंट, थर्ड डिग्री के लिए 4 और फोर्थ डिग्री के लिए 5, एन डिग्री के लिए n+1। जितने डिग्री की हम एस्टिमेशन कर रहे हैं उससे एक ज़्यादा पॉइंट चाहिए। अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि जी थर्ड डिग्री, रिमेंबर डेटा लिखने के बाद मैंने आपसे कहा था कि हमें क्या करना है इस डेटा के साथ। मिसिंग वैल्यू ऑफ एक्स के लिए कॉरस्पॉन्डिंग वाई वैल्यू का एस्टिमेट निकालते हैं। चलो भाई, मिसिंग वैल्यू हमने सेलेक्ट कर ली 4, इसके कॉरस्पॉन्डिंग मुझे वाई वैल्यू निकालनी। उसके बाद मैंने ये सोचना है कि मैंने कितनी डिग्री का एस्टिमेशन करनी है, तो मैंने कहा भाई थर्ड डिग्री की करनी। चलो भाई, ये भी तय हो गया। थर्ड डिग्री का मतलब कितने पॉइंट इस्तेमाल करने हैं, तो मैंने कहा भाई 4 पॉइंट, ऐसे 4 पॉइंट कि 4 जिसपे मैं एस्टिमेट x=4 जिसपे मैं एस्टिमेट कर रहा हूँ वो उन 4 पॉइंट्स के दरमियान ही कहीं होना चाहिए। अब एक सिलेक्शन तो वो 4 पॉइंट्स का ये हो सकता है, लेकिन आप देखें कि इस रेंज ऑफ एक्स वैल्यूज में 4 इज टुवर्ड्स द एंड, जबकि इफ आई कंसीडर दीज 4 पॉइंट्स फॉर थर्ड डिग्री, तो 4 जो है वो इन बिटवीन आ रहा है। सो आई विल कंसीडर थर्ड डिग्री का मतलब है मैं ये इस्तेमाल करूँगा। This first order divided difference will be used in the formula here. This second order divided difference will be used here. This third order divided difference will be used here. Now, what is my first point? The first point is 2.8, 10.1. तो यहाँ जो y0 लिखा है, y0 के बजाय सब y1 हो जाएंगे। लेकिन once I have made the decision कि मैं थर्ड डिग्री एस्टिमेशन करनी है and I have to use these 4 points, I will treat this number as 0. So अब ये x0, ये x1, ये x2, ये x3 हो जाएगा, and then I start using this formula. So what is y0? I have to use y0. अब जो हमने हाईलाइट कर दी वैल्यूज, इसके हिसाब से y0 जो है वो 10.1, तो हमने 10.1 लिखा प्लस the next term uses first order divided difference starting at x0, जो कि ये मौजूद है। So I can write down this as copied value, or for the time being I just use -2 point
285, the numerical value. And this number, first order divided difference value, has to be multiplied with x minus x naught. So where is my x? My x is 4. इस पे कि मैं estimate कर रहा हूँ. So 4 minus x naught. My selected x naught, y naught are these. So 2.8. I have written this term of the formula. Now I have to write this term. This term contains second order divided difference starting at x naught. So that is from here. So I choose this value, second order divided difference, and I write down here 0.512266. And then I have a product of x minus x naught and x minus x1. So x is 4. 4 minus x naught is 2.8 multiplied by x minus x1. So 4 minus x1 is 3.5. The second term is written. That means I have up to now considered second degree estimation. But मुझे थर्ड डिग्री का कहा गया तो मुझे ये टर्म भी लिखनी है. इस टर्म में y third order divided difference. Third order divided difference starting at x naught is this. So I use 0.208082 multiplied by 3 factors, x minus x naught, x minus x1, and x minus x2. So x is 4. So 4 minus what? X naught, 2.8 multiplied by 4 minus next x value, 3.5 multiplied by x minus x is 4, next x value, and that is 4.6. This third degree term is now written. This is the third order divided differences, x minus x naught, x minus x1, x minus x2. The result is obtained to be 7.589, roughly 7.6. So देखें कि डेटा का ट्रेंड कैसा था. 3.5 पे 8.5 y वैल्यू और x इक्वल टू 4.6 पे y वैल्यू 7. इसका मतलब ये वो रीजन है जहां पर के एक y वैल्यू डिक्रीज कर रही है. So my result should have been between 8.5 and 7 to cater for the decreasing trend. So that is the case. 8.5 से कम होते होते वैल्यू 7.6 आ गई at x equal to 4. In this way, this formula is used. And what if I consider fourth degree? Advantage of this formula is that कि ये मेरे पास थर्ड डिग्री रिजल्ट आ चुका. इस थर्ड डिग्री रिजल्ट को मैं एज इट इज पेश कर दूं नंबर को. Now this represent what? This term, this term, this term, and this term. To make it a fourth degree approximation, I just need to add the next term. And the adding next term means what? The next order divided difference. हमने हर दफ़ा यहाँ फॉर्मूले तो डिवाइडेड डिफरेंस आखिर में लिखे हैं, लेकिन कैलकुलेशन में हर दफ़ा पहले डिवाइडेड डिफरेंस लिखते हैं. तो fourth order divided difference will be what? That will be this value, so 0.056172 multiplied by what? थर्ड ऑर्डर में 3 प्रोडक्ट्स थे, फोर्थ ऑर्डर में 4 प्रोडक्ट्स होंगे. X minus x naught, x minus x1,
x minus x2 is 4.6. ये 3 प्रोडक्ट आ गए जो पिछली वाली टर्म में भी थे. अब एक प्रोडक्ट और लिखना है हमने. 4 माइनस नेक्स्ट 4 माइनस नेक्स्ट x वैल्यू 4.6 के बाद 5.7. गड़बड़ हो गई. नॉट कैलकुलेटेड. ये मैंने कोई एक्सेल एरर की है. मैंने इक्वल टू नहीं लिखा यहाँ पे. दैट इज द एक्सेल एरर and this time I get 7.6. Now third degree estimation for y given x equal to 4 was this. The fourth degree estimation for y given x equal to 4 is 7.62. There is a slight change. Now this slight change can be interpreted as what? A general principle is that if the data scatter is arbitrary, higher the degree, better the approximation. But we don't make it a principle. ऐसा अक्सर हमें मिलता है, खास तौर पे ये जो डेटा है जिसका स्कैटर यहाँ बना हुआ है, decreasing, then it starts increasing, and in this range ये जो dip आ रहा है y values के अंदर, that dip is indicated here. तो जब मैं estimation करूँगा तो असल में parabolic, this part is parabolic. अगर मैं geometrical shapes में सोचूं, overall behavior looks to be cubic. How? We can see that in this part, अगर आपको calculus याद है, concavity is downward and here the concavity is upward. So this is more like a cubic. So third degree estimation would be better. Because हमें जो डेटा का स्कैटर नजर आ रहा है उसकी ज्योमेट्रिकल या डिफरेंशियल प्रॉपर्टीज जो हैं वो हमें ये बता रही हैं इसका ओवरऑल बिहेवियर जो है वो थर्ड डिग्री पोलिनोमियल वाला है. तो थर्ड डिग्री एस्टिमेट इज बेटर. अदरवाइज द डेटा स्कैटर अगर हमें कोई बहुत ज़्यादा वाज़ेह डिफरेंशियल प्रॉपर्टीज नहीं दिखा रहा, देन अ हायर डिग्री एस्टिमेशन इज कंसीडर्ड बेटर. Of course, a beginner remain confused between these approaches, but this is not an important thing for you right now, because when I take a quiz or an exam, I will give you data of this type. I'll ask you to estimate a y value for a missing value of x, and I will instruct you to do what degree approximation. So you use a third degree polynomial, and third degree polynomial means up to this point. Second degree polynomial means up to this point. Fourth degree polynomial, that means another term added is that जो कि अभी हमने किया. So मैं आपको degree of polynomial to be used आपको बताऊंगा. At times ये भी बता दूंगा कि कौन से पॉइंट्स इस्तेमाल करने हैं. But at other times I may not tell you कि कौन से पॉइंट्स इस्तेमाल करने हैं. तो जिस x पर आपने एस्टिमेशन करनी है उस x के आगे पीछे के पॉइंट्स इस हिसाब से कि थर्ड डिग्री कर रहे हैं तो 4 पॉइंट्स, तो 4 के ऊपर 2 और 4 के नीचे 2. दैट इज परफेक्टली ऑल राइट. लेकिन जब मैं तुम्हें 4 डिग्री कहूँगा तो 5 पॉइंट लेने होंगे. तो इस वक्त जो कुछ मैंने किया है उसमें 4 के ऊपर 2 पॉइंट्स और 4 के नीचे 3 पॉइंट्स इस्तेमाल किए हैं. सो यू हैव टू मेक दिस डिसीजन योरसेल्फ, वेदर इट इज थर्ड डिग्री अप्रॉक्सीमेशन और अ फोर्थ डिग्री अप्रॉक्सीमेशन. मैं 1.2 से शुरू बिल्कुल नहीं करूंगा कि इस केस में 1.2 से
4 6 तक, that third degree approximation will be in a sense biased. K4 is towards this end of the data, not in the middle. हाँ, अगर x equal to 3 पे मैं कहूँ estimate करो, तो x equal to 3 पे estimate करने के लिए तो मैं first 4 points इस्तेमाल करने होंगे third degree के लिए. With that comment, I consider discussion on how to use Newton's divided difference interpreting polynomial as complete. Uh, for those who have a flavor for programming, this is the complete algorithm. Not necessary, but if you, ये मैंने वही रिजल्ट जो हैं यहाँ पे ऐड किए हुए हैं. एक्सेल शीट से कॉपी करके वही ग्राफ है और उस पर डिस्कशन है और सेकेंड डिग्री अप्रॉक्सीमेशन कैलकुलेशन की हुई है एट एक्स इक्वल टू 4 और now note that second degree approximate x equal to 4 has come out to be 6.53, where points used were 2.8 to 4.6. So इस दौरान हम देखते हैं x equal to 4 पे value should have been between 8.5 and 7, and what we have got is 6.5, which is not a good result. So which 3 points you have to use make a difference. That according to the scatter of the data, you get values in between or values outside. So second degree is not a good choice, and we repeat the calculation with second degree approximation, लेकिन अगले 3 points इस्तेमाल करके, and that's a better result. As per trend of the data, the second result is more suitable using third degree. Using second degree, but next 3 points. Then I have here considered the calculation that I have just described and computed in Excel sheet. But calculation is not completed. So that these examples demonstrate how to use Newton's divided difference interpreting polynomial. How to make, so we started from what? We started from what are divided differences, how to construct divided difference table. Then we demonstrated how to estimate value of y for a missing value of x using Newton's interpreting polynomial formula, divided difference interpreting polynomial formula, and that means what formula? This formula. First degree approximation के लिए यहाँ तक, second degree approximation के लिए यहाँ तक, third degree के लिए यहाँ तक. We also discussed कि हमें अगर second degree करना है तो हमने पहले वहाँ तो हमने सब कुछ सोच समझ के किया था एक्सेल शीट में, लेकिन यहाँ हमने दिखाया है कि अगर सेकेंड डिग्री के लिए मैं फर्स्ट 3 पॉइंट इस्तेमाल करूँ तो मेरे रिजल्ट रीजनेबल नहीं है, लेकिन नेक्स्ट 3 पॉइंट इस्तेमाल करूँ तो मेरे रिजल्ट डेटा स्कैटर के हिसाब से बेहतर है. Data scatter for x is equal to 4. For x is equal to 4, if I try to read the value, it's between 7 and 8. So अगर आपके पास रिजल्ट 8 भी आया है तो दैट इज नॉट रीजनेबल. मगर हम देख चुके हैं कि थर्ड डिग्री के साथ हमने जो कैलकुलेशन एक्सेल में की, थर्ड डिग्री के साथ जो हमने एक्सेल में ये कैलकुलेशन की, दैट इज रीजनेबली क्लोज टू व्हाट दिस डेटा ट्रेंड शोज. एक्स इक्वल टू 4 के लिए 7 से थोड़ी ऊपर, 7 और 8 के बीच में है वैल्यू, एंड दैट इज व्हाट इज गिवन. फोर्थ डिग्री ये बताती है कि इट इज मोर टूवर्ड्स 8, एंड यू कैन रीड डेटा फ्रॉम हियर. 4 इज नॉट इंक्लूडेड, बट अगर हम जो
वर्टिकल एक्सेस बना लें, इसको वर्टिकल लाइंस बना लें, तो हमें अंदाज़ा होगा, या स्केल ये चेंज कर दें। Let me try. Excel. Now see. At x equal to 4, 6, 6.5, नहीं, ये 5 हिस्से किए, 6 और 7 के, 6 और 8 के 5 हिस्से किए, तो एक हिस्सा कितना हुआ? 2 divided by 5.4. So 6, 6.4, 6.8, and 7.2, 7.6 से थोड़ा नीचे वैल्यू है, और हमारा रिजल्ट जो है 7.6 से थोड़ा नीचे आया 30 के प्रॉब्लम. So this is the best result. This is the best result. With that, let me conclude today's discussion. Save this Excel file so that I can share it with you people. So I've saved it and I'll share this sheet with you also. And with that, I conclude today's discussion. Uh, for coming class, that is Monday, we have planned a quiz. एक assignment मैंने आपके लिए बना लिया है for the second half of the first chapter that we're discussing for solving system of non-linear equation. For a non-linear equation, जो क्विज के टॉपिक है उसमें मैंने सिस्टम ऑफ नॉन-लीनियर इक्वेशंस इंक्लूड नहीं किया, बट असाइनमेंट में नॉन-लीनियर इक्वेशंस का भी मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ. तो assignment will make you, if you do the assignment before Monday, or most of it, that will be a good preparation for the quiz on Monday. मुझे तुम्हें ज़्यादा इंस्ट्रक्शन देने की ज़रूरत नहीं है, पहले काफ़ी इंस्ट्रक्शन दे चुका, वो सारी इंस्ट्रक्शन जो हैं वैलिड हैं आने वाले क्विज के लिए, और जो नेक्स्ट असाइनमेंट मैं आपको दे रहा हूँ उसके लिए. ठीक है? एनी क्वेश्चन? If all the 8% shown by this Zoom system, if they are really listening to me, no sir, no sir, no sir, no sir, no question. Okay. So let me terminate. First, I'll terminate the recording.